बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी डिस्कस अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देन वी डिस्कस फर्दर। बच्चे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच डी एंड एफ ऑर्बिटल्स आर पार्शली फिल्ड। बच्चे, अगर आप थोड़ा सा प्रोडक्ट टेबल का थोड़ा आइडिया आपके जहन में हो, वी हैव 4 पार्ट्स ऑफ प्रोडक्ट टेबल। बच्चे, ये आपका एस ब्लॉक होता है, इसे कहते हैं फर्स्ट पार्ट। Then the middle one, that is called D block, and the right side, that is named as P block, and the bottom one, that is called F block elements of product table. तो बच्चे, D and F block elements, they are named as transition elements. तो इनको हम define करेंगे कि the elements in which D and F orbitals have partially filled electrons। जिन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन डी और ऑर्बिटल में पार्शियल फिल होते हैं, मींस नाइदर कंप्लीटली फिल्ड नॉर एम्प्टी, दे आर नेम्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एंड दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन बिकॉज इनकी प्रॉपर्टीज जो है, डी और एफ की प्रॉपर्टीज एस और पी के दरमियान में होती हैं। देयर प्रॉपर्टीज आर in between S and P block elements. Now, one more very important point. There are two types of transition elements. बच्चे को आप नाम देते हो D block elements, and second of them is called F block elements. And D block is also named as, that is, इसको बच्चे आप नाम देते हो, these are outer transition elements, and F block are named as inner ट्रांजिशन। इट इज बिकॉज अब इनकी फिलिंग करते हैं ना इन द प्रोडक्ट टेबल, तो आपके सेकंड लास्ट रो में वी हैव द एलिमेंट दैट इज लेंथेनम, एंड बॉटम रो कंटेन एक्टिनियम। लेंथेनम एटॉमिक नंबर बच्चे 57 है। अब इसके बाद एलिमेंट की फिलिंग करते हो टुवर्ड्स एफ ब्लॉक। द एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एफ ब्लॉक इज सीरियम, हैविंग एटॉमिक नंबर 58। तो आपने लेंथेनम के बाद सीरियम को बजाय इनसाइड द टेबल आपने इसको बाहर प्लेस किया बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन, एंड सो दैट दे आर नेम्ड एज इनर बिकॉज दे शुड बी इनसाइड द टेबल। एंड व्हेन यू फिल 14 एलिमेंट्स, योर लास्ट एलिमेंट इज लुटीशियम एटॉमिक नंबर 71, and 72 element, that is your hafnium. It is there, it is the element atomic number 72, so that these elements should be outside the table. After 71, 72 should be there, but they are written inside the table. That's why they are called outer transition. सेम बच्चे पैटर्न पे एक्टिनियम 89 एलिमेंट है, थोरियम 90 टेबल से बाहर है, एंड एनिक एट लॉरेंसियम एटॉमिक नंबर 103 and again 104 inside the table. So that D block are called outer transition, but इनको हम नाम देते हैं outer transition, and F block are named as inner transition. तो ये बच्चे हमारे पास दो इसके बेसिक पॉइंट और D block और F block एलिमेंट्स के outer and inner transition because of their location of product table. Now we discuss the series of transition elements. बच्चे, transition elements में दो तरह की सीरीज होती हैं। एक को आप नाम देते हो that is D block series, और एक को आप नाम देते हैं F block. We say there are two series of transition elements. बच्चे, एक को आप नाम देते हैं D block series for D block elements, and second one is series of F block elements. तो बच्चे, आपके पास दो तरह की सीरीज हैं in the product table. And when we discuss D block elements, तो बच्चे अगर D block की आप बात करते हो, if we have idea of product table, बच्चे अगर बात करते हैं product table की, you know that ये आपका S block है, सेंटर बच्चे आपका D block का होता है, राइट साइड फॉर P ब्लॉक, एंड बॉटम वन इज F ब्लॉक। तो हम डिस्कस करें D और F ब्लॉक को, तो अगर बात करते हो टेबल की कंस्ट्रक्शन की, वी नो दैट टॉप वन इज हाइड्रोजन, टॉप इज हीलियम। आप इनके फिलिंग करते हो, यू हैव जस्ट आइडिया फॉर प्रोडक्ट टेबल हेयर। वी हैव फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, देन फोर्थ पीरियड, देन फिफ्थ पीरियड, then 6th and 7th period, 4, 5, 6 and 7,
and these two are the part of 6 and 7 period. Now this series is called first transition series named as 3D series. Second one is 4D because इनके electrons 3D में आते हैं, 4 वालों के 4D, then 5D and 6D. Then bottom one is their F block named as first transition for F block is 4F series and second one is 5F. If we discuss about 3D series, it's starting from the element scandium, ends at zinc. Then 4D series starting from element yttrium, symbol is Y, ends at cadmium. And third transition series, that is 5D, starting from lanthanum and ends at mercury. And the last starting from 6D series starting from actinium, and 6D series is named as actinium series. अभी इसकी filling complete हो रही है. Now in the 4F series, this is starting from the element named as cerium, that is 58, ends at lutetium, Lu, and the 5F series starting from the element thorium and ends at lawrencium. तो बच्चा आपके पास D block में there are 4 transition series. तो बच्चा आप इनको one by one discuss करते हो. Number 1, they are named as 3D series. 3D series. This series starting from scandium Sc21 and ends at zinc 30. This is the first transition series, also named as 3D series. It contains 10 elements. Then बच्चे second series, that is named as 4D series, also named as second transition series or outer transition series. It is starting from the element yttrium, atomic number 39, and ends at cadmium, atomic number 48. It also contains 10 elements in this series. Third transition series, that was named as 5D series, also named as third outer transition series because D blocks are outer transition. It is started from the element lanthanum, atomic number 57, and ends at mercury, atomic number 80. Then the last one, the fourth one, that is fourth transition series, also named as 6D series. ये बच्चे आपकी स्टार्ट होती है from the element actinium, 89 is the atomic number onwards. तो ये बच्चे आपकी इंफॉर्मेशन थी फॉर डी ब्लॉक सीरीज. फॉर एफ ब्लॉक देयर आर 2 ट्रांजिशन सीरीज. बच्चे फर्स्ट को आप नाम देते हो फॉर द इनर ट्रांजिशन सीरीज, दैट इज नेम्ड एज 4F सीरीज, also called first inner transition series. It is started from cerium 58 and ends at lutetium Lu, that is 71. And the second transition series, that is 5F series, also named as second inner transition series or 5F series. तो ये बच्चे आपकी सीरीज जो है ये स्टार्ट होती है द एलिमेंट नेम दैट इज योर थोरियम एटॉमिक नंबर 90 and ends at lawrencium atomic number 103. So बच्चे there are 2 types of series in the product table, and when we discuss about their general electronic configuration, now we discuss the D block series. आपके D block elements की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा आप देखो डी की स्टार्टिंग हो रही है 4th पीरियड से, एंड इसके बच्चे हमारे पास फर्स्ट पार्ट दैट इज द 4s. ये आपका 4s ऑर्बिटल्स में आते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रुप 1 और 2 के, एंड आफ्टर दैट स्कैंडियम टू जिंक दे आर इन द 3D सीरीज. तो देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज दैट इज बच्चे आपके इलेक्ट्रॉन्स 4s और 3D, मतलब आपका नंबर जो s का है वो 4 है और d का 3 है, तो वी राइट एज ns2 ns and n-1d. अगर आप यहाँ पे n को 4 पुट करोगे you got 4s and 4-1 3d. Now electrons in s orbitals are either 1 or 2, and for d orbital electrons आपके फिल होते हैं 1 से लेके 10 तक. तो ये बच्चे आपकी जनरल कन्फिग्रेशन है फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट. If we discuss about general configuration of F block element, that is very important. That is in F block elements, F block की बच्चे स्टार्टिंग होती है 6th पीरियड से.
बच्चे आप चेक करो, ये आपका 6s ऑर्बिटल है। देन आपके इलेक्ट्रॉन डी में एंटर हो रहे हैं, दैट इज लेंथनम, एंड आफ्टर दैट लेंथनम 57 you got cerium 58, then electron goes to 4f. it means आपकी कॉन्फ़िगरेशन बनती है, इलेक्ट्रॉन 6s से एंटर होते हैं 5d में और d के बाद जाते हैं 4f में। अगर मैं जनरल बात करूं, लेट अस सपोज इसको n मान लें, you may write as ns, then 5d means n minus 1d, बिकॉज आप 6 पुट करोगे तो 6 minus 1 that's equal to 5, एंड बच्चे 4, it means n minus 2, 6 minus 2 that's equal to 4f. And now electron in s are 2, electrons in f are 1 to 14, and look at that, after lanthanum it is the d1, it is the d1, इलेक्ट्रॉन d1 में एक एंटर होता है और फिर आपके इलेक्ट्रॉन सारे f में एंटर होते हैं। तो ये बच्चा आपके पास जनरल कॉन्फ़िगरेशन d और f ब्लॉक एलिमेंट्स की। Now we discuss about the very important topic, typical and non-typical transition elements. Now बच्चे अगर हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट टेबल के डी ब्लॉक को, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द डी ब्लॉक। बच्चे इसका फर्स्ट मेंबर दिस वन, दैट इज ग्रुप 3b, which आपका प्रोडक्ट टेबल में ग्रुप 3b है, एंड देन यू गॉट 4b, एंड देन 5b, 6b, 7b, 8b, एंड देन बच्चे जो आपके सेकंड लास्ट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप नाम देते हो ग्रुप 1b का, इसको नाम देते हो ग्रुप 2b का। इफ यू सी प्रोडक्ट टेबल केयरफुली, these are the numbering of the transition elements according to group number. This is your D block element. ये सारा बच्चे आपको मैंने D block यहाँ पे ड्रॉ किया। Now if we discuss the elements scandium and the first member of group 3b and the last member is zinc, तो बच्चे इस रेफरेंस से हम बात करेंगे। Here scandium is the member of D1, तो बच्चे एंडिंग होती है D10 पर। आप रेगुलर फिलिंग करते हो, D में 10 एलिमेंट आते हैं, आप जब फिलिंग करते हो तो बच्चे जिंक फैमिली ग्रुप 2b जो है, इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज D10। नाउ वी डिस्कस अबाउट टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, अगर हम बात करते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, डेफिनेशन इज द एलिमेंट्स विच हैव आइदर empty d orbital, empty d orbital or completely filled d orbital, completely filled d orbital. These are the definition for non-typical because ये अपने d इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में यूज नहीं करते हैं। जैसे आपके जिंक एलिमेंट है, इसके D10 है, अब जिंक जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट को बॉन्डिंग में यूज नहीं करेगा। स्कैंडियम ग्रुप 3b की जितनी फैमिली है, scandium, yttrium, lanthanum, when they forms a bond, they always forms a bond in +3 state, means their atomic number 21, they ends at 4s2 3d1. After losing 3 electron, their configuration is 4s0 and 3d0. तो बच्चे इनमें d में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, तो ग्रुप नंबर 2b and group number 3b, they are named as non-typical transition elements as they do not use d electrons for bonding, तो ये बॉन्डिंग में d इलेक्ट्रॉन को यूज नहीं करते। इन केस ऑफ टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, that is they have partially filled electrons in d orbitals, तो अच्छा इनके इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में पार्शियली फिल्ड होते हैं। these are ग्रुप नंबर 4b। आप जब फिलिंग करोगे बच्चे 1b से पहले हमारे पास ग्रुप आता है, दैट इज द ग्रुप नंबर 8b। तो ये बच्चे आपके एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 4b to 8b and the elements of group 1b. So these are the groups that obey all the properties of transition elements as they have partially filled electron in d orbital. So they are named as typical transition elements.